Yeah, the agenda for today's presentation is to give you an overview of the project, to take you through the guidelines for the proposal writing and presentation, look at the evaluation criteria, visit the key dates, and then close the presentation with a question and answer session. I would also like to remind everyone that the last day to submit your proposals is the 17th of November, and to please follow our social media platforms, LinkedIn, Facebook, etc., as that is where we will be communicating any updates regarding this project. Now, shedding some light on Karandaaz. Karandaaz, Pakistan was established in 2014 as a nonprofit special purpose vehicle set up under Section 42 with a mission to foster economic growth and create job opportunities through financial inclusion of unbanked and underserved individuals and enterprises in Pakistan. Karandaaz, Pakistan has two sponsors, namely the UK Foreign, Commonwealth and Development Office and the Bill and Melinda Gates Foundation. Karandaaz, Pakistan has four verticals, which are the Karandaaz Capital, which focuses on wholesale investment equity, Karandaaz Digital Financial Services, which promotes digital payments, Karandaaz Knowledge Management and Communication, which focuses on research and knowledge products for internal and external consumption, and Karandaaz Innovation, which has two components, which are Women Ventures and the Innovation Challenge Fund. This project will fall under the Digital Financial Services Department and is sponsored by the Bill and Melinda Gates Foundation. Now a little about Raast. Raast is Pakistan's first ever instant payment system, enabling end-to-end push payments. It is simple, interoperable, and offers real-time settlement-based digital payments. The initiative of Raast was taken by the State Bank in collaboration with Karandaaz, Pakistan. It was designed for G2P and P2G payments, and Raast has managed to pull a major chunk of interoperable payments across the board, with bulk sending corporate payments already enabled. Recently, the merchant payment module, that is P2M, has also been rolled out by the State Bank. This is the first step towards the digitization of the merchant payment ecosystem. The P2M module is a service tier that exclusively caters to payments of any type at all merchant locations. However, enabling all merchants in Pakistan to accept cashless payments will require an industry-wide effort. Therefore, to carry out this initiative, Karandaaz Pakistan calls for proposals from any entity with experience in merchant onboarding to target physical merchants across all districts of Pakistan and digitize the entire merchant payment ecosystem. This will require a strategic and tailored approach for different regions and different types of merchants, because a strategy that might work for Al Fatah in Islamabad, for example, will not work for a Kiryana store in Miachano. So this project is looking to pilot multiple sustainable models for all Tier 2 and Tier 3 merchants, as our goal is to onboard and maintain 25,000 merchants onto Raast in the next 3 years. The merchant onboarding entity's role will be multifaceted, encompassing a diverse range of responsibilities, some of which include market research and analysis, relationship management, and customer support for the merchants, developing a standardized onboarding process, collecting and verifying merchant information, merchant training and awareness, merchant education on security best practices, monitoring and reporting, as well as assisting merchants in documentation and agreements. Now let's have a look at the process flow and the proposal submission timeline. Currently, we are on stage 1, which focuses on the solicitation of applications. This will be followed by stage 2, which is the deadline for the submission of any queries that you might have, and responses to these queries will be published by the 7th of November. And the proposal submission deadline itself is the 17th of November. And this is going to be before the close of business hours on the 17th. And then the project will be initiated after that, after some discussions with the final applicants. And the anticipated timeline for the project itself is going to be 2 years. Now let's have a look at the proposal itself. The proposal must include all of the following sections. So section 1 covers basic organization and contact information.
This should include information regarding the management team, the executive team, the project team, as well as how the collective experience of the team will complement the team's strength. This is to give confidence to the merchant onboarding steering committee that the applicants have the required experience as well as the relevant institutional background for this project. And please, for the first 3 sections, for 1.1 to 1.3, this should be provided in tabular form, the information regarding the management teams. This section should also cover the team structure in relation to the key deliverables of the project. And if you are working in a consortium, how the responsibilities and activities will be divided and managed. Also include how your profile fits with the broader objectives and activities of the State Bank Strategic Goal 5, as well as the buy-in of top management and BOD if applicable. Now, moving on to the executive summary, this should provide an overall summary of your project strategy and project approach. Then we have the project methodology, which should give an overview of the terms that you are proposing in terms of the scope and functionality and how your team will plans on achieving that, as well as how you will plan on building the resource infrastructure that includes the activation teams, how you would hire them, if there are any digital channels for merchant acquisition, what those are, and how it will be deployed, etc. Next, we have the target segment. In this section, please specify which provinces and respective areas within those provinces you will be targeting. You must choose one province from each category, which is provided further in section 8 of the TORs, and then choose cities or areas within those selected provinces based on the categorization which is provided in section 4.2 of the TORs. And within this section, you can also further categorize physical merchants according to area clusters, the volume/value of transactions, tier 1, tier 2, tier 3, etc. This is to further assist in your strategy breakdown and financial breakdown in the upcoming sections. Next, we have the market analysis. Market analysis should demonstrate your understanding of the project landscape and the current ecosystem to support the rationale for your approach in the following section. Your analysis should include the target market, the clusters and categorization of merchants in the market, the current relevant products, practices, and solutions, key trends, opportunities, as well as any gaps, limitations, or challenges within the ecosystem which contribute to the low penetration of digital payments among merchants. Next, we have the project rationale. This should provide the basis for your market analysis, which was conducted in the previous section. It should justify your strategy, which should include your target merchants, as well as the regions that you will be targeting, and also include which specific elements of the problem your approach is trying to address, and justify the economic viability and sustainability of your strategy. Moving on to subsection 7, which is the project design. This section should cover the project design for the entire 2-year duration. It should provide complete details of the on-field teams that will be deployed in each region, what would be the hiring mechanism, how teams would be trained, how the teams would onboard and train the merchants as well. It should also include the end-to-end scope and strategy for merchant onboarding, the project process flow, as well as your target segment, and a detailed breakdown of the merchant onboarding strategy, which you will be implementing. In this section, please also include the monthly and weekly targets that you will be committing to meeting, as well as the breakdown of how you intend to achieve those. And you should also propose the results indicators as well as the key performance indicators according to the key parameters used to measure the agent network performance. Next, we have the implementation plan, which should include a realistic timeframe for our implementation. This should include an implementation methodology reflecting a systematic flow of activities in the design and implementation, including performance deliverables, timelines, and milestones.
This will be followed by the project management and governance arrangements. This should include the team structure and requisite expertise to manage the project, the roles and responsibilities in delivering the project at various stages, and the governance arrangements for strategic direction, quality assurance, and timely delivery. Also, please note that the merchant onboarding entity must have or should be developing offices and or call centers located within 100-kilometer radius of each of the target areas. And you will also be required to deploy relationship merchants for each target area. Next, we have the model development for sustainability, scalability, and soundness. Here you should recommend and develop a self-sustainable model for the future of digital payments to be implemented at merchant sites. Attach any supporting evidence and data, and the model is required to demonstrate the potential for scale-up as well as sustainability after the support from Karandaaz Pakistan will phase out. Next, we have the monitoring, evaluation, and learning section. This should detail out the expected impact of your approach as well as the key results, which should include both outputs and outcomes that you expect. Please also include in this section the number or percentage of merchants that you see will be registering or uptake once your strategy is rolled out, as well as the number of active merchants and the digital payment volume and number of transactions. Next, we have inclusivity and innovation section. This section should cover how your proposal and strategy is inclusive as well as innovative. The risks assessment section should, within the section, you should provide a risk matrix in tabular form, ideally, which covers key risks, both internal as well as external, that you foresee in project implementation, and any risk mitigation measures as well. In addition, also provide a risk rating against all the risks. And if applicable, any support which will be required from Karandaaz Pakistan in managing the risks should be discussed in this section as well. Next, we have the growth strategy, which should outline your strategy for growth and specify key underlying assumptions, total addressable market, competition, market share, etc. In the milestone section, you should cover you should list the overarching milestones as well as the potential targets which will be achieved by the end of the 6-month mark, the 12-month mark, 18 months, and 24 months, as well as the expected impact of your strategy. Next, coming on to the financial proposal. This section should provide a detailed budget covering the full duration of the proposal program, as well as the overall funding, which is requested from Karandaaz Pakistan. It should be broken down in a milestone-based disbursement schedule, and all amounts should be in Pakistani rupee. In case of a consortium, the proposal should specify the share of each consortium member in the budget, as well as their financial or monetized contribution. Also note that all project costs or any related expenditures will be directly dispersed to the MOE, who will be held responsible for further dispersing the allocated compensation, which includes any fees, incentives, commissions, etc., to the merchants. Next, we have the overall value of funds and utilization. This should include explain the major cost drivers, as well as the costs related to planned activities and target outcomes. You please list all the costs under the cost heads and categories of merchant onboarding and merchant maintenance within this section. Also note that all operational and administrative costs will come under the cost overhead of merchant onboarding, and they cannot exceed 15%, as Karandaaz Pakistan will not be covering those. Next, we have the merchant onboarding and maintenance rates. A cost breakdown for the merchant onboarding entities quoted onboarding and maintenance rates for each specific target region and city should be provided here. Please utilize the table to provide this information, which is a table which is provided in the annexure, and use the TORs to select the target regions and cities. This section should also include a cost breakdown according to the weekly and monthly targets that you have previously set in the previous sections. Then we have section 4 and section 5, which is just the required documents, as well as any additional information that you may choose to provide.
Now, a few guidelines. Your proposal, as well as any accompanying documents, should be emailed to this following address, which is raast.moe@karandaaz.com.pk. It is strongly recommended that applicants use the same headings as those which are provided in the proposal template, and all amounts should be in PKR. Now, the final presentation. The selected applicants will be required to make a formal 45-minute PowerPoint presentation, 15 minutes for the presentation itself, and then a 30-minute Q&A to this steering committee. This presentation should cover your entire proposal, a summary of your entire proposal, and it will also provide the entity an opportunity to interact with the applicants to gain further clarity on the model methodology, gauge the capability of the team, and assess the assumptions that are used to develop the proposal. Now on to the evaluation criteria. So the eligibility criteria for this project is that the entity needs to be registered for a minimum of 2 years. You need to have demonstrated experience in the physical onboarding of merchants in the financial or payment-related industry, knowledge of payment schemes and familiarity with the regulatory landscape, technical expertise in payments and transactions with diverse payment platforms, a strong understanding of data privacy and security regulations, as well as regional establishment within the provinces. Now on the evaluation criteria itself. So the relevant experience of the entity accounts for 15% of the overall weightage. And the profile of the project team, again, 15%. The quality of the proposed strategy and methodology is 30%. The innovation and sustainability. Also, the proposed strategy and methodology, this also accounts for your for the model which you will be developing after support from Karandaaz Pakistan phases out. And okay, moving on to innovation and sustainability, that accounts for 25%. And if any entity commits to operations in more than the minimum number of regions, or commits to more tier 3 regions, they will be getting additional marks for that. Experience of onboarding female merchants, 5% for that. And if you have any number of partnerships with banks, you can receive up to 10% for that, depending on the number of partnerships you have. Now on to confidentiality. Okay, so any information related to the examination, evaluation, comparison, and post-qualification of the proposals and recommendation of contract award shall not be disclosed to firms or any other persons not officially concerned with the selection process until publication of the contract award. Now, any questions? You may ask them right now. Also, if you are not able to ask any questions right now, then you can email them to this address and they will be published on the 7th of November online. Yes, Mohammed Wajahid, you have a question? Walaikum Assalam. I'm Mohammed Wajah from Bengal. I just have a little bit of question. Gigi, go on. The point you have mentioned in the draft, there are some sub points as well. Can you also email us that as well? Also, can we address your queries more relatively? Sorry, can you repeat the question? In a proposal, you have suggested some points to be answered, like team details, summary, project methodology, target segment. But in that, you have also highlighted some of the sub headings you have also highlighted in that. Can you also email us that as well, so we can answer all that in one place? All the subheadings are provided within the template itself. Does that answer your question? Okay, Yeah, I'll look into that. Specific. Otherwise I'll email you. Okay. Umar Farouk, please unmute yourself and you can ask the question.
जी, Umar Farouk. In case you're speaking, we can't hear you. Acha, we'll move on. Acha, Ji, we can hear you now. Bole? You'll have to unmute yourself from your end. Yeah, can you hear me now? Yeah, we can. Go on. All right. I'm sorry, I don't know your name. Actually, I had joined a little bit late. Actually, I was expecting from this session a little bit more. The things that you have narrated, this is all mentioned on the website as well. Ji, But if you have anything I else right was, yeah, I was expecting that you would be well elaborating the things, but it was just like reading the context, and this context is already available on your website. So what is the difference, how we can differentiate between your presentation and the context which is already available, how you can make it easy for us? So the proposal preparation is quite lengthy process, so if you guys can make it a little bit easier for the parties so that they can speed up the process. Omar Faisal here. So if you have a specific question about anything that you don't understand, which is written on the website, please ask that and we'll clarify it to you. Else, we think that we have mentioned all the stuff on the website. So if there's a clarification or a confusion, please ask that and we'll let you know. We'll be very happy to answer on that. Sir, thank you so much for your reply, but I think you have given the email ID. If I'll be getting any confusion, then definitely write you an email for that. But my point is that I was expecting something else, that about this presentation session, that you will be well elaborating the things, but it was just like, the reading the context. So I think I was expecting something else. Okay, thank you. Ehtisham Umar, you'll have to unmute yourself from your end. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Can I speak in Urdu? जी, of course. जी. अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे थोड़ी डिटेल चाहिए होगी. ये किस जी. तरीके से वर्किंग करेंगे? एहतशाम साहब, मैं थोड़ा सा, आपने ऑनलाइन इसका जो हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई हैं, आपने वो देखी थी? जी, मैंने देखी हैं, राइट की हैं, सारी रीड की हैं. ठीक है. तो बल्कि इस हवाले से थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है. तो मैंने मेल भी सेंड की थी मैंने इस हवाले से आपके जैसे ईमेल पे, लेकिन उसका आंसर नहीं आया. वो पब्लिश होंगे 7 नवंबर को ऑनलाइन फॉर एवरीवन. सही, ठीक. तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज इसमें समझनी है तो वो बता दीजिए, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जी. इसमें मुझे ये जानना कि ये जो आपने मर्चेंट बनाने हैं, इसमें क्राइटेरिया क्या होगा? आप कोई इस पे कोई अकाउंट जैसे ओमनी वगैरह है, कोई फ्रेंचाइजी बनाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं बनाएंगे. मैं आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो अकाउंट्स मुख्तलिफ बैंक्स के ही होंगे. मुख्तलिफ बैंक्स के साथ हम आपको जो भी प्रपोजल सक्सेसफुल होते हैं उनको हम कनेक्ट करवा देंगे बैंक्स के साथ. स्टेटमेंट हेल्प करेगा इसके अंदर, और आप लोगों के मर्चेंट्स के पास मुख्तलिफ बैंक से अकाउंट्स खुल जाएंगे, और अपने मर्चेंट को एनेबल करना होगा ताकि वो रास्ट के ऊपर मर्चेंट ट्रांजैक्शंस रिसीव कर सके. उसको ट्रेन करना होगा, आपने उसको एनेबल करना होगा, और उसको जो भी उसकी फैसिलिटेशन देनी है, मुयसर करनी है, वो आपने
प्रोवाइड करनी हो उसे। ऑलरेडी इनके मर्चेंट जैस कैश वगैरह के ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये सेम क्राइटेरिया होगा? नहीं जी, इंटरऑपरेबल हम इसे कहते हैं। सो ये जो रास्ट का मर्चेंट होगा उस पे हर बैंक की ऐप से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो सकेगी जी, वो तो क्लोज लूप पॉसिबल है। इस तरह नहीं होगा। चलें, ठीक है जी, शुक्रिया जी। ओके। अरे सर, उमर फारूक है। फैजल साहब, मैं आई एम सॉरी, मैं हाथ रेस मैंने की हैंड रेस किया हुआ है। मेरा ये पॉइंट था कि रास्ट आईडी पर सिर्फ आपका कोई ना कोई एक जो नंबर होता है, ये मोबाइल फोन नंबर होता है मर्चेंट का, वो ही मैप होता है। तो क्या वो सारे बैंक्स के साथ उसका एक ही नंबर हो सकेगा? क्योंकि बैंक्स की ये होती है कंडीशन कि वो किसी एक वक्त में किसी एक ही बैंक के साथ आप लिंक कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। सो आइडियली आप मल्टीपल अकाउंट्स तो लिंक नहीं कर सकेंगे ना पेमेंट रिसीव करने के लिए। आप एक ही जी। अकाउंट में पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वो जो भी अकाउंट होगा आप वो कनेक्ट करेंगे अपनी मर्चेंट आईडी या रास्त आईडी के साथ पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, और वो आप जब चाहे आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों के लिए तो जो भी हमारा मर्चेंट होगा उसके पास इंटरनेट और एंड्रॉयड की फैसिलिटी होना लाजमी है, ऐसी है सर? या हम उसको कोई क्या कहते हैं, यूएसएसडी चैनल भी दे रहे होंगे? जी, उसमें ना मेंशन किया हुआ है। सो यूएसएसडी पे भी हो सकता है, क्यूआर बेस्ड भी हो सकता है, आईडी बेस्ड, आईबैन बेस्ड, मल्टीपल तरीके हैं जिससे आप ये पेमेंट्स इनिशिएट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन क्यूआरस में दी हुई है। जी, मैंने पढ़ा, लेकिन इतना वो लैबोरेटिव नहीं है। पॉइंट इज कि मोस्टली जो मर्चेंट्स होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट आउटसाइड द लाहौर या जो भी हमारे अर्बन सिटीज हैं, उसमें जब हम जाते हैं तो रिटेलर्स के पास ज़्यादातर फीचर फॉर्म्स होते हैं या उनके पास इस तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं होती है। सो जी, पॉइंट यूएसएसडी इज, उसके अंदर यूएसएसडी मेंशन है एज अ चैनल। जी, आप यूएसएसडी पे कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ठीक हो, थैंक यू सर। थैंक यू जी। Sir Khair, can you please unmute yourself? आप पूछिए। Hi, can you hear me? Hello, yes, we can. So I had three questions actually. The first one is a PSO, PSP license or or any kind of regulatory license required for merchant onboarding? No, we will not require any any license to onboard merchants. You will be facilitating one of the banks to onboard merchants onto them. Okay, so it's like an ISO model for the bank basically. Yeah. Okay. Second question was, so will we be doing any kind of technical integration for this? Or for example, I run a company and we have above 500 merchants. So can I leverage that same network and enable those merchants on Raast with the bank that I partner with through you guys? Yes, you can do that. We don't expect any technical integration from you, but if you have about 500 or any number of merchants, you can onboard all of them onto Raast as well. Okay. And third, so is there any kind of a commercial incentive for our company? For example, if currently what happens, like, you know, how the aggregator model works for debit credit card. So you're actually onboarding with the bank and the bank is giving you a commission, a revenue share basically on transactions. So is it going to be under the same model where, for example, we bring a merchant on board, say he's a Mizan merchant, and his account is in Mizan, so he links his Mizan account to the Raast ID, and that becomes his P2M ID then. So a customer goes and pays. Now the transaction, does the full amount go to the bank, or and will the bank be reimbursing us with some kind of commission, or is it just a free activity? Ji, Sarkar Saab, so let me explain. In the proposal, it's mentioned that we expect a proposed model from you which has to be self-sustainable.
because obviously Karandaaz will be funding the selected models for a limited time only. Correct. उसके बाद if it's not sustainable, तो वो model won't work in future. Therefore, you have to propose a model कि वो आप कैसे करना चाहते हैं. And obviously, if the steering committee, जिसमें State Bank और market experts भी होंगे, if that steering committee thinks that this can be sustainable in the future, so we would happily go and fund that model as well. I understand that, but for that, I also need to know what the cost would be for the transaction, right? For example, say a debit credit card transaction. If it costs the Right. bank 1.8%, I give it a headed 2%, I earn 0.2%, fine. So Ji. similarly for Raast, is there a standard cost that the bank faces, which I can incorporate in my model to which Okay. that maybe I want that much, yeah. Right. So it's good that you clarified this. Raast does not charge anything to its participant, any fees. So any bank that does a transaction through Raast, it's absolutely free of cost. Okay, and throughout for P2M, I know for P2P it was free, so P2M is also free. For P2M, Raast does not charge anything to its partner banks. Okay, and the banks are allowed to charge though, right? They can charge the merchant a discount rate, an MD or. Yes, it's open to them, but then again, sustainable model के ऊपर it will depend when you make a presentation. Okay, yeah, that's understandable. Yeah. All right. Thank you. Thank you. फैसल साहब, मेरा उमर बात कर रहा हूँ. मेरा एक नहायत मासूमाना सा सवाल है जी कि जी. this is very important for any merchant onboarding entity that he must be operating since last 2 months in the same capacity you have already mentioned. Last 2 months? 2 years. Sorry, 2 years. जी जी. So this is mandatory for the party, whichever is going to send the proposal. No, so the company has to be registered in the last 2 years, or for the last 2 years at least. That's the thing. No, what I am getting is कि उसका 2 साल का कम से कम जो है उसकी एग्जिस्टेंस को 2 साल हो चुके हों, ऐसे ही है? एग्जिस्टेंस को कम से कम 2 साल हो चुके हों, लेकिन उसमें ये कैद नहीं है कि आपके फाइनेंशियल पेमेंट्स या मर्चेंट पेमेंट्स का आपका एक्सपीरियंस इतना हो, ऐसी कोई कैद नहीं है उसके अंदर. बट यस, कंपनी सेटअप हो, which means के थोड़ी सी रजिस्टर्ड एंटिटी हो. वी डू नॉट वांट बिल्कुल फ्रेश कोई स्टार्टअप आके मॉडल प्रपोज करे, बिकॉज वी एक्सपेक्ट के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आइडिया होना चाहिए उस एंटिटी को. अच्छा. So for example, Sorry, you'll have to unmute yourself. आप mute हो गया. जी आवाज आ रही है. So मेरे जी, कहने का जी. मतलब है कि मेरी कोई भी अगर मेरी कंपनी है which is providing services of any kind like retail onboarding or something else, any kind of services, and which is being registered 3 years back and currently working with the with some sort of resources, so they can apply for this proposal. जी बिल्कुल they can. ठीक है. और आपका सारा टैक्स वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, जो भी आपने मेंशन किए हैं. जी बिल्कुल. सर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट कब से है, ये बता दीजिएगा. ये जैसे फाइनल होंगे कोई प्रपोजल सिलेक्ट होंगे इसके अंदर से, सो उनके साथ प्रॉब्ली समवेयर इन दिसंबर विल किक ऑफ द प्रोजेक्ट. Okay, so December or January we would be starting onboarding the, Yeah. Okay. Thank you sir. Thank you जी. Bilal Anjum, please unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम. This is जी Bilal Anjum from DG Khata. How are you? Good, thank you. I have 2 questions. Basically, I was just looking at the presentation. In one of the subsection, there was mentioned about fund utilization that we needed to provide in that section. So, is there any cap for the funds overall we'll be spending it, or a budget?
or it's just open? This one. And secondly, I think my question is similar to Bhavani, that we will be one of the entities selected for onboarding the merchants, if or not. But what's for us in this proposal? I mean, how shall we make the money out of this entire ecosystem that we will create? Right. So, Bilal, I'll answer your second question first. That is a model that you need to present. Obviously, if you will not make money, then your business is not going to be sustainable. So that's why we said कि एक self-sustainable business model आपने present करना है. We understand that there is one model which is based on the merchant discount rate, but we expect that there should be other models as well. So एक तो वो आपके proposal के ऊपर depend करता है. You figure out something, innovate something, and come to us with a proposal. अगर वो हमें self-sustainable लगता है, so definitely we'll go with that. Now coming back to your earlier question about the funds utilization. Again, so when you make a proposal, you will share your cost for onboarding different merchants. ठीक है, उनका एक initial cost है, उनकी maintenance cost है, which is the monthly cost. So Karandaaz, obviously, we have an internal cap as well. But जो maximum हो सका, and if the model seems very sustainable and very innovative to us, very disruptive to us, we'll fund that to whatever caps we have. उसमें ऐसे नहीं, it's not an open kitty कि आप उसको बस वो जितना मर्जी उसको यूज करते रहें. But yes, to certain extent, we'll definitely fund it. That's the answer to this. So I couldn't find my answer in it anyway, but again, it has to be from our side, the proposed budget. This is what I get. जी, budget आपने propose करना है ना? All right, the maximum capping uski, like if we could know, so within that limits we could just shuffle the cost heads and all. Because currently, why I'm asking for this, because we currently have a base of more than 1 million merchants already, and out of those 1 million merchants, around 200,000 merchants are currently making they are registered on our wallet, have done KYCs, and they are registered with us, and they are making digital payments from our platform. So whatever cost that we had to incur, we have incurred already, and whatever maintenance cost of the merchants, that is something we can provide. But onboarding is already done with us, and all we have to do is to find out the way to link those merchants via Raast. So that is what we have to open up our platform just to link to Raast. So my question was in particular to that pretext कि हमारे पास तो वो cost नहीं होगी onboarding की, क्योंकि हम already वो काम कर चुके हैं. It's done with us. Right. So आप देखें, एक cost आप absorb कर चुके हैं. But you can always in your proposal, in your proposal you can share a cost कि जी हमें उस पे रीडू भी काम करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस अगर QR एनेबल करना है मर्चेंट्स को, तो उनको ट्रेन करना है, उनके पास जाना है, कोई उनके वहां पे जो भी QR पेस्ट करनी है या जो भी मॉडल है, फिर उसको किसी बैंक से लिंक करना है. सो दैट इटसेल्फ विल बी अ कॉस्ट. ठीक है, बाकियों की निस्बत कम होगी मगर एक कॉस्ट होगी. And obviously, when we see, let's say, 5 proposals, 6 proposals, uske andar, let's say we just have to limit ourselves to 3 proposals at the 3 pilots at the most. तो उसमें obviously जिसकी cost कम आ रही होगी, that will be preferred. Because मैंने अभी पहले भी आंसर किया था. So this does not mean कि 25,000 is only 25,000 merchants. ये बढ़ भी सकते हैं. If we are still left with the funds, ये बढ़ भी सकते हैं. सो आप अपनी कॉस्ट जो आपकी आती है वो आप मेंशन करें अपने फाइनेंशियल प्रपोजल के अंदर, और उसकी बेसिस के ऊपर विल इवैल्यूएट जी. आपको एडवांटेज ही होगा जितनी कॉस्ट आपकी कम आएगी ऑनबोर्डिंग की. ऑलराइट जी, गॉट इट. थैंक यू जी.
Bilal Janjua, can you please unmute yourself? Yes, thank you very much. My question is, I have actually 2 or 3 questions. I was trying to understand the budget for this project, but I think this question has been asked and answered several times. But I don't see a number or a value which has been clearly communicated. So, is there a number which we can look at for this project budget? Number right now. It all depends on how many pilots does the steering committee select, and what is the cost of onboarding those merchants. So if you want a fixed number, I cannot give you a number. I see. Okay. And the other question is on the pre-qualification criteria. You see, this is a relatively new concept for Pakistan. So there would be very few companies or people who would have international or national level experience for this, payment system and money system in Pakistan. Would you accept international joint ventures as well to bid for this project? As long as they are partners, lead partners in the proposal, yes, we will. Okay. And the last question which I have is, you've not mentioned RFID payment system in your options. So is there a specific reason for that, or are you familiar with RFID system as well? Yeah, but for instant payments, we don't have that kind of gadgets in the areas where tier 3 merchants are being deployed. Please understand that these are not card-based payments. These are push-only payments. Yes. So RFID is just a channel, which could be the front end. For us, Raast has 4 options. You can make a payment to IBAN, to USSD, static QR, dynamic QR, or the merchant ID. So what's behind the merchant, that's totally, okay with us. We don't really need to know how you are initiating those transactions. If you think there's a good enough merchant customer base for that kind of a use case, you can do that. Yeah, but we've seen a lot of success of RFID in India, Russia, many places. So why this was not considered in the technology platform? You can add that to the proposal. I see. Okay. And the other the scope of this project is mostly domestic market based. Have you given a thought on the cross-border payment connectivity as well, or is that on the cards, or you're just looking at the domestic audience only? Right, Bilal. So we can only fund something that is as per the rules of State Bank, right? At the moment, it's totally domestic payments, because Raast is only a domestic instant payment gateway system. So we cannot do cross-border transactions at the moment. If and when the State Bank decides to open up Raast for international cross-border payments as well, obviously the merchants will start to accept those transactions as well. I'm sure that you understand. I'll give you an example. Pakistan and China has a trade of almost $20 billion per annum, and it's $18+ billion from China to Pakistan, and hardly anything goes back to China from Pakistan. So a lot of retail related transactions are connected with the Chinese market anyways, and it is coming through a very complex system of importers and wholesalers, and there is 20-30 people involved in the whole transaction. There's a lot of payment issues, and so I was thinking that if this kind of connectivity would happen with this merchant to merchant, M to M, or cross border, it could really make this whole ecosystem connect with the whole world actually. Yes, it's a good idea, but I think we are not the right audience to take this call.
you need to present this to the central bank because it is for them to decide and approve. All right. Thank you so much. These are all my questions. अरे सर एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली फॉर लेमैन अंडरस्टैंडिंग ये ट्रांजैक्शंस किस टाइप की होंगी फॉर बैंक्स? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, अगर आप क्लियर कर सकें। मर्चेंट जो है वो Sorry, कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहा होगा? customer key transactions. A customer pays the merchant any through Raast. That's it. अच्छा, मतलब वो किसी भी, उसके पास अगर कोई बैंक का अकाउंट है या उसके पास जैज कैश है, जिसका भी रास्त आईडी अवेलेबल है, तो वो पेमेंट वो कर सकता है। जी। Is that I'm clear? Okay. Thank you. Atif Ahmed, please unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My question is, I've observed few sectors on your website about can any solution be a sector specific solution, or it has to be a broader overarching solution for all the merchants? I need further clarity on the question. So what do you mean by sector specific? As long as it's a merchant which accepts, probably offers a certain type of services and charges for those specific services. But if they are willing to accept payment through Raast for whatever services they give, that can be considered as a merchant, yes. No, my question is, service can be available to any merchant. This is not an issue. The issue is the pricing of the service. For example, if I'm a startup and I've got a customer base available with me, just to give you a background, I've got a mobility startup. So going forward, we'll have a huge customer base, and each driver will act as a merchant for us, and we can the solution that we are developing can take care of those guys very easily with a nominal fee. But if I'm going to roll it out to retail merchants, then there'll be a cost to it. So my question is, why I'm putting my financial proposal together, what is the horizon I should be looking at? Only specific to my startup, or a broader horizon and lighter canvas? Right. So, Atif Saab, the first point is that Assalamu alaikum. Ji, Assalamu alaikum. So the first thing is that the merchant has to be interoperable. It cannot accept payments in a closed loop environment. One. Okay. And obviously, to increase the adoption of digital payments, we would really prefer if it's a stationary merchant, not a mobile merchant. Okay. That would be preferred. But yes, if there's a proposal, you can give those details in the proposal as well. Okay, inshallah. But I've just mentioned the preference. Yeah. That was the only thing I was only concerned about, the pricing of, because if I'm rolling out this platform beyond my own startup, then obviously there'll be a cost associated to it. Okay. So inshallah, looking forward to it. Thank you, Professor. Ovais Heather, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने जो रोड मैप दिया है वो है 25,000 का, राइट, फॉर 3 years। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि दिस इज फॉर tier 2 and tier 3 cities ओनली, और tier 1 को भी हम फोकस कर सकते हैं इसमें? राइट। सो अगर आप टीओआस देखें तो उसमें tier 1 को भी करना है, लेकिन वो tier 1, tier 2, tier 3 उसके अंदर मेंशन किया हुआ है।
So when you take on a certain region, उसके अंदर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों सिटीज हैं, आपको तीनों पे फोकस करना है। टीयर 1 भी करनी है, 2 भी करनी है, और 3 भी एक आध आपने पिक करनी है। ठीक सो पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या? जी, मुझे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो वेंडर सिलेक्शन होगी बेसिकली वो आप कोई एक वेंडर फाइनलाइज करेंगे या मल्टीपल वेंडर्स होंगे जो कि इसमें ऑनबोर्ड होंगे? नहीं जी, इसके ऊपर मल्टीपल एंटिटीज कैन बी ऑनबोर्डेड एज वेल, एज लॉन्ग एज जो मॉडल है वो सेल्फ सस्टेनिंग और डिस्ट्रक्टिव हमें नजर आएगा, टू इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अच्छा, इसमें फैसल आप लोग जो जो भी वेंडर सेलेक्ट होगा डेफिनेटली आप उसको बैंक के साथ कनेक्ट करोगे फॉर द सेटलमेंट, फॉर जो क्यूआर की जो है बेसिकली बैक एंड की जितनी भी ऑपरेशन एक्टिविटीज के लिए। तो मुझे बताइएगा कि इसमें भी मल्टीपल बैंक्स होंगी, कोई सिंगल, लेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे एक बैंक नॉमिनेट कर दिया, कोई थर्ड पार्टी और वेंडर सेलेक्ट होता है उसको एक बैंक नॉमिनेट कर दिया, तो इस किस्म की ये नॉमिनेशन होंगी, बैंक के साथ कनेक्ट करेंगे? राइट, सो इसके ऊपर एज एंड व्हेन बैंक्स कीप गेटिंग रेडी, वो उस पूल में अवेलेबल होंगे और हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देंगे उन बैंक्स के साथ। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक बैंक के साथ या मल्टीपल बैंक्स के साथ जाना चाहते हैं, रीजन वाइज बैंक्स के साथ डिफरेंट एरियाज में अकाउंट्स खोलना चाहते हैं, दैट विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन यू एंड देन दोस बैंक्स। मगर जो जो बैंक्स रेडी होते जाएंगे हम आप लोगों को कनेक्ट करा देंगे उनके साथ। अच्छा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसी बैंक के साथ भी, जो भी पैनल बैंक्स हैं जो कि आपके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं फॉर एक्वायरिंग पर्पस के लिए, तो वो बेसिकली उनके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं, राइट? जी 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 बिल्कुल, चंद एक बेसिक चीजें होंगी वो कंडीशनल होंगी, बट हमारी कोई बैंक की प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा फैसल, ये जो एग्रीमेंट होगा बेसिकली इट्स अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन मर्चेंट कंपनी एंड जो थर्ड पार्टी होगी उसके साथ, या बेसिकली इट्स अ डायरेक्ट अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट एंड द थर्ड पार्टी? सो जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंटिटी है उसका जो मर्चेंट्स होंगे वो कर रहा होगा, उसका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंटिटी को हमारे साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर उसके ऊपर चीजें मैंडेट होंगी, उसने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इट्स मीन दो एग्रीमेंट मर्चेंट के साथ साइन होंगे, एक हम जो ऑनबोर्ड करेंगे और एक जो आपके साथ कनेक्ट करना है, राइट? नहीं 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 नहीं, सो ओके, सो कारंदाज जो भी एंटिटी सिलेक्ट होती है मर्चेंट्स एक्वायर करने के लिए, उस एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, बिल्कुल एग्रीमेंट सही है, साइन। बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी बिल्कुल सही। उसके अंदर उस मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंटिटी को इन्फॉर्म कर देगा कि मर्चेंट के साथ क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, मगर वो जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंटिटी है वो मर्चेंट के साथ उसने खुद वो इंश्योर करानी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मेरा सवाल है इसमें फैसल कि देखिए जो सेटलमेंट करेगा तो वो तो बैंक करेगा, तो जब सेटलमेंट बैंक करेगा तो इट्स अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए ना बेसिकली? वो फिर उस वक्त यस विल फिगर दैट आउट, आई नो आप जिस एंगल से आ रहे हो वो ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हुई है, वो हम स्टेट बैंक को भी इन्वॉल्व करेंगे, और उसमें जो भी बैंक्स ये मर्चेंट्स के लिए अकाउंट्स खोलेंगे उसमें कोई सेटलमेंट तो एक तो इंस्टेंट हो रही होगी, क्योंकि मर्चेंट का अकाउंट किसी ना किसी बैंक में होगा, आपके पास अकाउंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, आप उसको ये सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे होंगे डिजिटल पेमेंट से सेट करने के लॉजिकल है, लिए। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सो बिल्कुल। वो तो एक तरह से उस बैंक का कस्टमर हो जाएगा मर्चेंट, लेकिन वो आपके बैंक के साथ क्या डिस्कशंस हैं वो फिर उस स्टेज के ऊपर व्हेन यू मेक अ प्रपोजल हम उस वक्त देखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, ये एनटीएन वगैरह जो मांगा गया है, कैंटीन अवेलेबल है, लेटर ऑफ इंटेंट, ये क्या मतलब है? पार्टनर्स वगैरह ये नहीं है? मैं समझा नहीं, ये तो स्टैंडर्ड, कोई भी आप प्रोक्योरमेंट में जाते हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सही। एनटीएन वगैरह तो है मेरे पास, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट जो सा ये अवेलेबल नहीं है।
ये मेरा ख्याल है आपको अपने एडमिन से या किसी से चेक करना होगा। ये तो एक स्टैंडर्ड हर प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर होता है जी। चलें, ये मैं चेक कर लेता हूँ, फिर लॉयर साहब वो कंफर्म कर देगा। Bilal Shah, please unmute yourself. Yes, Assalamu alaikum. So my question was regarding the onboarding of 25,000 merchants, right? So I am already an MSP and I have around 200,000 QR enabled merchants. And if let's say we do onboard 25,000 merchants with the partnership of Raast and I'm already an MSP, so will I be managing these 25,000 merchants for myself, or will I also be managing other bank merchants as well? I just needed some clarity on this and of course the pricing. But पहले आप इसकी बेशक दे दें मुझे clarity. तो बिलाल, पहली चीज ये है कि we will fund a total of 25,000 merchants, right? This does not mean कि कोई एक entity सारे के सारे करेगी. This will be based on कि हमें कितने proposals select होते हैं pilot के लिए, and then it will be distributed amongst all those selected pilots. Number 2, आप वही merchants manage करेंगे जो आप खुद onboard करेंगे onto Raast. ठीक है, सिर्फ वो वाले merchants आप manage करेंगे. ठीक है, जी. ठीक है. Yeah, understood. Thank you. On Abbas, can you जी please unmute जी yourself? अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा क्वेश्चन ये है बॉस के जो अभी अब पार्टनरशिप हो रही है एक नॉन बैंकिंग कंपनी की विद अ बैंक, so who will take the responsibilities of transactions as well as of the technology, who will be who will be responsible for that? जी, so on जो पार्टनरशिप है वो जी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो वो जो मर्चेंट होगा वो मर्चेंट किसी ना किसी बैंक का कस्टमर होगा. मर्चेंट को ट्रांजैक्शंस आपके साथ शेयर नहीं करनी है. बिल्कुल आप सिर्फ मर्चेंट को ट्रेन करना है ऑन हाउ टू रिसीव डिजिटल पेमेंट्स वाया रास्त. क्यूआर पे आपने उसके सिर्फ प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने हैं, प्लस आपने इंश्योर करना है कि अगर मर्चेंट को कोई इशू आता है तो उसको सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकें. फॉर इंस्टेंस बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करवाना है, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग इज एंड द अजम्पशन इज कि टियर 3 मर्चेंट्स जो हैं वो मे बी इतने ज्यादा लिटरेट ना हो और हो सकता है अनबैंक भी हो मोस्टली. तो आपने उनको सिर्फ फैसिलिटेट करना है इन ऑल दोस थिंग्स, और वहां पे उसको इंश्योर करना है कि वो ट्रांसफर डिजिटल चैनल्स के थ्रू करता है रास्त के थ्रू. अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था बॉस के जो आई एम फ्रॉम नंबर्स, आई हैव गॉट अ एप्लीकेशन, रिटेलर बेस्ड एप्लीकेशन. सो अगर हम टेक्नोलॉजी हमारे पास है एंड वी आर पार्टनरिंग विद अ बैंक, सो हु इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? दैट इज माय क्वेश्चन. मींस टेक्नोलॉजी बैंक देगा हमें, या वो हमें आगे जो है वो ऑफलोड करनी है, वो हमें डिप्लॉय करनी है, या फिर हम टेक्नोलॉजी अपनी बना सकते हैं, हम बना के जो है वो किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल उसमें जो बेयर मिनिमम चीजें हैं ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो टू मेक अ पेमेंट ऑन रास्त, सेंडर और रिसीवर के पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए. ठीक है, स्टेप 1. स्टेप 2, जो रिसीवर मर्चेंट है वो उसके पास जिस बैंक का भी अकाउंट होगा वो उसका जनरेटेड क्यूआर या रास्त आईडी कुछ ना कुछ पेस्टेड होगा जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी. ठीक है. स्टेप 3, जो सेंडर है या परचेजर है उसके पास किसी ईएमआई का या बैंक का अकाउंट होगा जिससे वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा. राइट, स्कैन कर सकता है, जिससे कोई भी प्रोसेस कर सकता है, स्कैन कर ले, जैसे भी कर ले. सो रास्त सिर्फ इन दो एंटिटीज के बीच में ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा. नाउ बिहाइंड द सीन्स आप बैंक के साथ कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, उनकी ऐप में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज टोटली बिटवीन यू एंड द बैंक. रास्त के पेमेंट प्रोसेस में वो हमारे लिए कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. वो आपका बिहाइंड द सीन आपका जो भी अरेंजमेंट बैंक के साथ है. Okay. Got it, boss. Got it. Thank you.
Thank you. Faryal Nawaz, please unmute yourself. Hi, can you guys hear me? Yes, we can. Good session. I'm Faryal from PayMob. I just have a simple question. You mentioned in the principles that you were highlighting earlier on for the criteria, the selection one. So basically, I belong to PayMob, and PayMob is a fairly new startup in Pakistan, and we would be having our 2 years time, that mark in the coming first quarter of next year. So I just wanted to know how stringent is the 2-year criteria for you guys? It was earlier asked by Umar Saab as well, I believe, because we haven't exactly had 2 years by the time we will be submitting this proposal. So just wanted to know the leniency on that. G Faryal, the rules are well documented, but what you can do is you can partner with one of the entities that has already been working or is available in the market for more than 2 years. Yeah. You can partner with them and come together. All right. We do have a partner bank like that. So, okay, fine. I'll take it up like that. Thank you. Thank you for the clarity. Abdul Manan, can you please Thank you, unmute Ji. yourself? Yeah, can you hear me, Ji? Ji, go on. I have just one simple question, Ji. I wasn't able to find yours on the website. Curious if somebody can share the link or something like that. That would be helpful. Acha, okay. I'll see if someone can share the link here. It's on the Karandaaz website. There is a term in this experiment, call for proposals. उसमें नीचे terms of reference लिखा हुआ है. जहाँ वो phrase लिखा हुआ है terms of reference, आप उस पर click करेंगे तो it will automatically take you to the TOR document. Got it. Thank you, Ji. थोड़ा सा I joined late. सिर्फ इतना समझा दीजिएगा कि I mean, is there any minimum requirement for the number of merchants? Yeah, you saying basically like you mentioned there's a cap of 25,000. Is there any minimum basically? Yeah, could be anything, and the cap is only 25,000 merchants जो आप लोग खड़ा करना चाहते हैं जी. Ashadi, we want to pilot up to 25,000 merchants in total. You can come forward with as small a number as 400, 500. कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया लेके मगर उसके अंदर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर क्लियरली चीज मेंशन की हुई है कि वी वुड प्रेफर कि आप जहां पे भी आए वो एक क्लस्टर बेस्ड कन्वर्जन हो मर्चेंट्स की. So minimum का कोई नंबर नहीं है. Your proposal and your model has to be good enough. However, to participate and make merchants, terms of reference के अंदर mentioned है कि आपको कौन-कौन सी type of cities करनी ही करनी है हर हालत में. So it cannot be that you just say that I'm just going to do certain number of merchants in Karachi only. But then when you do that, Sindh में आपको tier 2 और tier 3 city भी एक ना एक cover करनी होगी. That's the model. Thank you. You're welcome, Ji. Wasif Mahmood, can you please unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू आपने मुझे मौका दिया. अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चंस थे इधर. मैंने मेंशन भी किया था कि ये आप हमसे मॉडल्स तो मांग रहे हैं, तो क्या ये मॉडल्स जो हैं आफ्टर इसके एक कोई यूनिवर्सल मॉडल सबके ऊपर अप्लाई होगा, या मैं रावलपिंडी से हूँ, मैं इधर रावलपिंडी में एक मॉडल आपको अपना करूं और एक लाहौर में मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंटिटी है वो अपना सजेस्ट करे, कराची वाली अपना करे, और वो सब सेपरेट चल रही होंगी. अच्छा वासिफ साहब देखें जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि रास्त की पेमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर है एक रिसीवर है. ठीक है. सो रास्त के एंड पे तो ट्रांजैक्शन उस तरह होगी. हम जो बात कर रहे हैं हम कमर्शियल मॉडल्स की बात कर रहे हैं. जी. सो आप अगर अपना एक मॉडल कोई सिटीज होगा,
अगर आप वहां पे वो मॉडल लेके आते हैं और हमें वो लगता है स्टीयरिंग कमेटी को कि वो सस्टेनेबल है, हेलो, ठीक है। जी, अगर जी उनको जी ये जी फील होता है कि वो मॉडल सस्टेनेबल है, तो उस पायलट को हम इनिशिएट कर सकते हैं। द आइडिया इज कि हम मल्टीपल पायलट्स इस तरह के जो मॉडल कमेटी को लगता है सस्टेनेबल होंगे उनको इनिशिएट करें, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पायलट्स वील एग्जैक्टली नो कि ये 5 या 4 या 6 मॉडल्स आए थे, सिलेक्ट हुए थे, इसमें से एक्चुअली ये 3 मॉडल सस्टेनेबल हैं, बाकी नहीं है। तो वो जो सस्टेनेबल मॉडल है उसके ऊपर फिर इंडस्ट्री जैसे करना चाहे कर सकती है। However, if someone still wants to go ahead and continue making merchants on their own model, then obviously हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। We are okay with that. हम सिर्फ फंड जो है ना वो पायलट्स को कर रहे हैं on the models that we think will be self-sustainable. That's the idea जी। ओके ओके। और इस मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप विद बैंक्स फॉर एमओई, मतलब जितनी ज्यादा पार्टनरशिप होंगी वो मतलब उतना प्लस पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? सो इसका ये मतलब है कि जो भी एंटिटी आ रही है मर्चेंट स्पेस के अंदर वो ऑलरेडी कुछ बैंक्स के साथ अगर तो काम करती रही है मर्चेंट्स ऑनबोर्ड करने में या किसी और चीज में, सो अपेरेंटली उनका एक्सपीरियंस आता है, दे ओके नो ओके कि किस तरह के इश्यूज होते हैं, क्या चीजें होती हैं। दैट्स द आइडिया। ओके ओके ओके। और ये जो है इसके अंदर ऑब्वियसली ये आपने एक और चीज भी मेंशन किया कि जो एमओई है उसके लिए कॉल सेंटर बनाना, वो भी क्या ये मैंडेटरी है अपना कॉल सेंटर रखना? और अच्छा देखें, उसमें कॉल सेंटर वाज वन ऑफ द थिंग्स बेसिकली, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो मर्चेंट है उसको इंस्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज चाहिए। वो अब आप कॉल सेंटर रखें या रिलेशनशिप मैनेजर रखें, उसके लिए कोई डायरेक्ट कांटेक्ट रखें, वो आपके प्रपोजल के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर्स का भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। The primary thing is कि as long as मर्चेंट बैंक की कस्टमर सपोर्ट की वो 72 आवर्स वाली क्यू में नहीं पड़ता और इंस्टेंटली उसका रेजोल्यूशन आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका कोई भी मॉडल आप प्रेजेंट कर सकते हैं फिर। राइट, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। Where's Heather? जी थैंक यू। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे उस सवाल का जवाब जरा फैसल प्लीज बता देंगे। जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा था, तो इट्स अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या इस पे भी डिसीजन आना है? अच्छा, सो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैंने एक्सप्लेन किया था, इट इज नॉट अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। Karandaaz will have an agreement with the merchant onboarding entity. That's it. ठीक है, उसमें मर्चेंट के ऊपर कुछ कंडीशन जरूर होंगी, वो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंटिटी मर्चेंट के साथ डायरेक्टली एग्री करेगा और साइन करेगा। सो Karandaaz will not be signing anything with the merchant. वो लेकिन वेंडर मर्चेंट से डायरेक्ट साइन करेगा के एग्रीमेंट? साथ होगा। सॉरी, जो वेंडर होगा वो बेसिकली मर्चेंट से डायरेक्ट एग्रीमेंट साइन करेगा, जो भी जी पार्टनर जी, होगा। वो डायरेक्ट उनके साथ होगा जी। अच्छा, लेकिन बॉस यहाँ पे मसला है ना, अगर मैं मर्चेंट को सेटल नहीं कर रहा, बैंक सेटल कर रहा है, तो इसमें मर्चेंट के साथ एग्रीमेंट जो है ना वो ट्राई पार्टी होना चाहिए, जो कि करंट प्रैक्टिस के अंदर भी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है और हमने पास्ट में भी काफी काम किया है। तो नॉर्मली वो ट्राई पार्टी होता है क्योंकि बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पेमेंट की, कि यार ये पेमेंट मर्चेंट को हम करेंगे। तो ये मेरी सजेशन है, अगर आप इसको जरा थोड़ा सा देख लें तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो जाएगी। और जी, अवैस थोड़ा सा पॉज से ना जरा एक डिफरेंट लाइन सोचिए। ये पुल पेमेंट नहीं है, दिस इज अ पुश पेमेंट। और मर्चेंट जो है वो किसी ना किसी बैंक का अकाउंट होल्डर है, आप उसको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकाउंट की ट्रांजैक्शंस आपके पास ना आ रही हैं ना आपके थ्रू जा रही हैं, वो इंफॉर्मेशन उसकी और बैंक के बीच में है। सो आप उसको सिर्फ हेल्प करेंगे ट्रेन करने में और ट्रांजैक्शंस पुश करवाने में। अगर वो उसको बैंक के साथ कोई इश्यूज आते हैं, आप उस पर सपोर्ट कर देंगे। लेट्स से
बैंक के अकाउंट के अंदर कोई चीज इशू आ रहा है एंड द मर्चेंट वांट्स टू स्विच ओवर टू अनदर बैंक या किसी और बैंक का अकाउंट यूज करना चाहता है, आप उस मर्चेंट को फैसिलिटेट करेंगे, दूसरे बैंक का क्यूआर पेस्ट करवा देंगे उसे। सो सेटलमेंट में कहीं भी आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, यू आर जस्ट गोइंग टू सपोर्ट द मर्चेंट। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द मर्चेंट डिस्प्यूट फैसल? मर्चेंट डिस्प्यूट पे अगर क्या होगा, पेमेंट डिस्प्यूट है, लेट्स फॉर एग्जांपल मर्चेंट कहता है यार मुझे पेमेंट नहीं रिसीव हुई, तो उस पे जी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे या हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे मर्चेंट को बैंक के साथ? जी, आप उस पे फैसिलिटेट मर्चेंट को ऐसे करेंगे क्योंकि जिस बैंक के साथ भी होगा उसका कोई स्पेसिफिक आरएम आप लोगों से भी कनेक्टेड होगा। ओके आप उस बैंक को रिक्वेस्ट करके पुश करवा के, क्योंकि मर्चेंट को सारी डिटेल्स और चीजों का आइडिया नहीं होगा, आप फैसिलिटेट करेंगे मर्चेंट को बैंक के साथ वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। इसके विद टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम बड़ी नेसेंट स्टेज के ऊपर है, इसकी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कोई गाइडलाइंस अनकरीब स्टेट बैंक से भी इशू हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट पायलट है, पायलट तो ऑब्वियसली है, लेकिन कल को जब फुल फ्लेज ये एंटिटीज काम करना शुरू हो जाएंगी तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन गाइडलाइंस भी आपको सेंट्रल बैंक शुड शेयर दोस गाइडलाइंस विद यू ठीक है। एंड विद अच्छा फिर एवरीवन। ठीक है, ओके अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे देखो, एक मर्चेंट के ऊपर क्या एक ही क्यूआर होगा, रास क्यूआर होगा, या उसमें मल्टीपल बैंक से क्यूआर हो सकते हैं? देखिए, इंटरऑपरेबल का मकसद ये है कि एक क्यूआर डिप्लॉय हो, और लेट्स फॉर जो जो स्टेट बैंक की गाइडलाइंस हैं ईएमबी को के बाद, उसके बाद वैसे भी एक ही क्यूआर डिप्लॉय होगा मर्चेंट्स के ऊपर। अब वो क्योंकि इंटरऑपरेबल है, फर्क उससे कोई भी नहीं पड़ता कि आप कितने मर्जी क्यूआर रखें, पेमेंट आप कहीं भी राउट करवा सकते हैं यूजिंग रास्त। नहीं, जैसे आपने पहले भी बताया कि आप ऑलरेडी कोई कुछ चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे, राइट? जैसे जी पी जी टू पी फ्री है रास के ऊपर, इस तरीके से पी टू एम भी है, राइट? अच्छा, जी जी बैंक नॉर्मली डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे मर्चेंट सेटलमेंट के ऊपर, जो कि एमडीआर होता है, कुछ ना कुछ तो एक्स वाई जेड, अभी आई थिंक आप जी ज्यादा जी, बेहतर बता दैट दैट डिपेंड्स, डिपेंड। वो आपके मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं ए बैंक के साथ कनेक्टेड हूँ, और उस मर्चेंट पे वहां पे एमडीआर जो है ना 1% है, और दूसरा बैंक मुझे कहता है कि नहीं यार तुम ये मर्चेंट मेरे पास लेके आओगे तो मैं 0.5 एमडीआर दे दूंगा, मैं अपनी रिलेशनशिप पे उसको वहां पे शिफ्ट करता हूँ, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? आप उसका वो रास्त एनेबल्ड क्यूआर जो है वो आप रिप्लेस करेंगे, रास्त का एक ही क्यूआर डिप्लॉय होगा एक मर्चेंट के पास। एक मर्चेंट के ये पास एक क्यूआर होगा जी जी, और उसको एक ही वेंडर मैनेज कर रहा होगा। जी, रास्त पेमेंट के लिए ये जब आप टर्म्स, जब मर्चेंट ऑनबोर्ड कर रहे होंगे तो ये आप टर्म्स उसके साथ एग्री करेंगे मर्चेंट के साथ। ठीक है, तो इट इट्स मीन इट कि किल्स द एक पर्पस कि वहां पे बहुत सारे क्यूआर लगे हों और वो चूज कर रहा हो। सो इंटरऑपरेबिलिटी का जो एक मकसद है वो ये है, एक ही क्यूआर हो, अगर पीछे कोई स्कीम्स या कोई और चीजें करनी है वो पीछे रीराउट हो सकती हैं ट्रांजैक्शंस। तो फैसल मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, जैसे इस्लामाबाद में डिवॉट्सन है, राइट? अगर मैं डिवॉट्सन को ऑनबोर्ड कर लेता हूँ अपने पास, जी मतलब एज अ वेंडर मैं ऑनबोर्ड करके लेके आता हूँ किसी भी बैंक के जी लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कल को कोई और वेंडर वहां पे जाके उसको अगर एमडीआर कम ऑफर कर रहा है कोई बैंक, तो उसको ऑनबोर्ड नहीं कर सकता, राइट? आ, देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, जब आप प्रपोजल बनाएंगे तो ये डिस्कशन में आएंगी। ऑब्वियसली कुछ चीजें उस वक्त सोचनी पड़ेंगी, कुछ कंडीशंस डालनी पड़ेंगी, कुछ चीजें अलाउ करनी पड़ेंगी। स्टेट बैंक के रिसोर्सेज हमारे साथ होंगे जब ये हम प्रपोजल्स वैल्यूएट कर रहे होंगे, तो ये चीजें उसमें आप क्वेश्चंस में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। कुछ चीजों पे आई बी डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल बैंक एज वेल, सो आई हैव टू आस्क देम। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर कल को कोई कम एमडीआर इशू कर रहा है, द आइडिया इज कि वो फिर आपसे परमिशन लेके एग्जिट करेगा और दूसरे बैंक के ऊपर जाएगा। बट द रिकमेंडेड मॉडल इज कि आपका अगर सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल माइनस एमडीआर होता है, कोई और मॉडल होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये चीज खत्म हो जाती है। बट विद टाइम ऑब्वियसली देयर विल बी लर्निंग्स, और अगर इसमें आपके कोई प्रपोजल्स होंगे तो वो ये रिकमेंडेशंस हैं, तो हमारे साथ प्लीज शेयर जरूर करें इस तरह हाँ, की वरना चीजें। तो एमडीआर वॉर शुरू हो जाएगी जिस तरीके से पॉस जी एक्वायरिंग जी के जी, ऊपर हो रही मैं है। इसलिए आपको कह रहा हूं, तो वो आप प्रपोजल जरूर रिकमेंड करें क्या होना चाहिए इसमें।
ग्रेट। अच्छा फैसल, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या हमारे कोई टारगेट्स होंगे स्पेसिफिक कि इस मर्चेंट से इतना वॉल्यूम जनरेट करना है, या ये इशूअर स्पेसिफिक होगा कि इशूअर पुश करेगा और आप लोग डेफिनेटली पुश करेंगे कि मर्चेंट के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहा है, या नहीं हमारे जी, कोई टारगेट्स होंगे? जी जी, मर्चेंट के ऊपर जो वॉल्यूम है वो आपका टारगेट होगा। वीकली, मंथली, हर तरह के टारगेट्स होंगे। अगर वो आप टारगेट मीट नहीं करेंगे, आपको उस मर्चेंट की उस मंथ की जो मेंटेनेंस फी है वो पे नहीं होगी। सो आपके साथ वो टारगेट्स एग्री होंगे। और ये टारगेट्स क्या, तो ये एग्री हम फ्यूचर बाद में करेंगे जब ये फाइनलाइज हो जाएंगे, राइट? ये आपने प्रोवाइड करने हैं अपने प्रपोजल टेम्पलेट में, वहां इट्स आल्सो अच्छा, गिवन टारगेट्स भी मैंने बताने हैं। जी, यू आर गोना प्रपोज देम। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर लेट फॉर एग्जांपल कुछ कैंपेन्स हमने अगर मर्चेंट लेवल के ऊपर स्टार्ट करनी है या कुछ चलानी है, तो उसके ऊपर क्या आप लोग सपोर्ट करोगे उस कैंपेन को, सेपरेट कॉस्ट को, या वो हम अपने प्रपोजल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें उसको? देखें, आप अगर कैंपेन्स आपने चलानी है, आप उसको वहां पे मेंशन करेंगे प्रपोजल पे और उसकी कॉस्ट अलग से दिखाएंगे। देयर इज अ चांस कि हम वो सपोर्ट कर लें, एंड देन देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि कारंदाज कहे वी कैन नॉट फंड दिस कैंपेन। मगर वो आप टू बी ऑन द सेफ साइड अलग से मेंशन जरूर कीजिएगा फाइनेंशियल प्रपोजल में। अस्सलाम लेकिन वालेकुम। मगर वो जो डेफिनेटली वो बेसिक्स नहीं, बेसिस नहीं होंगे इसकी। सर डेफिनेटली जिस तरीके से आप लोगों ने पी टू पी के अंदर पुश क्रिएट किया है, इसी तरीके से आप पी टू एम को भी करेंगे, आई थिंक स्टेट बैंक के साथ, ताकि वो ट्रैफिक तो आए मर्चेंट लेवल पे। हमारे तो टारगेट्स होंगे, डेफिनेटली हम तो वहां पे पुश करेंगे, लेकिन इटसेल्फ आप लोग भी वहां से आई थिंक मेरे ख्याल इशूअर को पुश करेंगे कि रास पे ट्रांजेक्शन करें। या बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो लेकिन अगेन हमने नहीं किया है, वो स्टेट बैंक का एक पुश है, और अभी भी इसके ऊपर स्टेट बैंक क्या कॉल लेता है, आई रियली कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर हमें कुछ एमआईएस वगैरह मिल रही होगी कि इस मर्चेंट पे इतनी ट्रांजेक्शन होंगी, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास कुछ इसका यूजर एक्सेस तो होना चाहिए ना, कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक मर्चेंट मुझे कह रहा है यार 1 मिलियन का मैंने वॉल्यूम दे दिया है, तो 1 मिलियन का वॉल्यूम दे दिया तो मेरे पास तो जी कुछ एक्सेस होना चाहिए ना, कि वो जी जी मुझे पता चले। जी जी, वो कोई उसका मैकेनिज्म बैंक के साथ एग्री होगा। आपके पास इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपका कंसोलिडेटेड वॉल्यूम का बिल्कुल बैंक आपके साथ शेयर करेगा, या कुछ ना कुछ उसका मैकेनिज्म विल हैव टू फिगर आउट। ठीक है। अच्छा फाइनल क्वेश्चन मेरा, कि मैं मेरी नेशन वाइड प्रेजेंस है तो मैं नेशन वाइड पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, राइट? आप कर सकते हैं जी। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैसल, थैंक थैंक यू यू। सो मच। Bilal Anjum, do you have another question? No, I think my questions have been answered. I don't अच्छा have ठीक है, any. आप अपना हैंड प्लीज डाउन कर दें फिर। बिलाल जंजुआ, आपका कोई और है? जी जी, आपका भी हैंड रेज्ड है जी। जस्ट अ फ्यू क्वेश्चन। एक तो इस पे टाइमलाइन आपने काफी कम रखा हुआ है। आई थिंक द प्रपोजल सबमिशन डेडलाइन इज 17th of November, which is just 17 days from now. So why the time, enough time was not given for the proposal making? Is there a specific reason? जी, बिकॉज बड़ा बेसिक प्रपोजल हमने मांगा है, दिस इज ओनली इट। हम लोगों के पास भी कुछ टाइमलाइन का क्रंच है, because there are certain number of merchants that we have to complete by 30th of June, और उसके लिए ये हमने किया है। मगर आपका प्रपोजल अगर आप वो टेम्पलेट देखें, इट इज नॉट अ डिटेल्ड प्रपोजल। मेरा ख्याल है 15 to 20 पेजेस का प्रपोजल होना है। इट वुडंट नीड दैट मच डिटेल्स। इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट और मेथडोलॉजी जिसके ऊपर आप इवेलुएट हो रहे हैं। या एंड इसमें जो M2M का पोर्शन है उस पे इतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं है आपका। इज देयर अ रीजन फॉर दैट? सॉरी, मैं एंड टू एंड का पोर्शन Merchant to merchant. You see, if there is a shopkeeper, he's buying goods from a wholesaler in somewhere, जी so जी he has बिलाल, to pay. सो इस वक्त रास्ट पे स्टेट बैंक ने जो यूज केस एनर्जाइज किया है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दोज यूज केसेस। सो एज एंड व्हेन स्टेट बैंक एनर्जाइजेस द B2B ट्रांजैक्शंस ऑन टू रास्ट, वो भी हम एनेबल कर देंगे इसके ऊपर।
You see, आप एक seclusion में काम नहीं कर सकते. You have to understand कि जो एक shopkeeper के पास जब आप जाएंगे, तो you know he has two sets of payments which he has to make or receive. So he is buying from the wholesalers and he has to pay them. So there has to be a mechanism in place for that. And then you know he's receiving money from the customers who are paying, you know, buying the goods from him and paying him. So आपने half cooked काम तो चलेगा नहीं. I don't think it will work. It has to be, both sides have to be covered, in my opinion. Yeah, I think you are right. But like I said, अभी क्योंकि B2B का use case Raast पे enable नहीं हुआ है, so there's always a way out. When the merchant gets the transactions into its merchant account, it can always initiate a transaction into any other account. वो जो भी standard rules हैं उसके through वो कर सकता है. So वो Raast के through नहीं होगा, could be directly, could be IBFT, could be any other means. लेकिन कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस मर्चेंट के ऊपर कि वो ऑनवर्ड ट्रांजैक्शन, वो यूज केस जो रास्त पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो ना करे. सो द सेम अकाउंट कुड बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, even for the use cases that are not on Raast. You see, on a macro level, what I understand is the State Bank is trying to bring everyone on the payments network, and you know, so the scale of the retailers in Pakistan is very massive. You know, you're looking at 60, 80 million retailers across Pakistan. So if that is the scale in the market, you know, if you cover every retailer or the wholesaler, when you're doing just a 25,000 merchant onboarding, what benefit can this bring to the economy? You know, if the scale is so big and the coverage is only for 25,000. So I want to understand the justification of this volume. You know. अच्छा बिलाल, पहले तो we are a country of about 250 million people. I don't think 60 to 80 million retailers हैं. You see, I used to work for a very large FMCG company, so I'm aware of the retail and wholesale numbers of Pakistan. So I'm giving you a very accurate number. ठीक है. So But then there are massive. If you incorporate wholesalers and retailers together, it could be even more actually. So okay, case ke Karandaaz is basically doing a pilot, right? Obviously, we cannot make Pakistan cashless. That is not something that Bill Gates has taken upon himself. So we are just doing a pilot to prove a concept के क्या models cashless payments के लिए हो सकते हैं. Once those models are available, I think it is up to the entire industry, the businesses, the fintechs, to go forward and start onboarding all of those retailers that you just mentioned. Yeah, you see, in essential, what I understand is कि आप चाह रहे हैं कि लोग अपने ideas आपको सब कुछ लिख के दे दें, और उसके बाद आप decide करेंगे कि कौन सा idea सही है, कौन सा नहीं है. And you know, the idea once it's already sent, it's out of your hands already. Professionals के असल, everything is all about the idea actually, you know. So आप सारे पाकिस्तान से ideas advance में इकट्ठे कर लेंगे without paying them. And you know, then it is your discretion to decide किसको काम देना है, किसको नहीं देना. There is no, you know, I don't understand the competition in this. How would the competition work? Is there a fair competitive environment which is in play here, or once the idea is gone, it's finished, you know, and then the owner of the idea has no control on the time they have spent to develop the proposal, and maybe it could be circumvented, it could be copied, it could be anything can happen to that. Okay. So Bilal, three things. Pehli cheez to Karandaaz is not into business, so we are just here to fund some ideas which we think will actually create an impact. If someone thinks that their idea will be leaked and they plan to invest themselves into any area, so I would then highly encourage that then they do not share their ideas. But this is for those entities
that are willing to, that have something in mind and need support, a funding support to implement it. उसके लिए we have initiated this pilot along with State Bank. जो हमें लगेगा कि ecosystem के अंदर हमें as in the central bank, and then there are going to be industry experts as well. जो इस steering committee को लगेगा कि can actually create an impact and make transactions cashless, उसको फिर fund करने के लिए we'll give those grants. That's the thing behind it. But the safety of the idea is nobody is guaranteeing that. That's the issue. We are guaranteeing that, as was also said in the presentation in the previous slide. कि ये देखें कि your ideas, proposal, everything will be confidential until the publication of the contract award. Yeah, but you're not signing a NDA or a NCND. You're not doing that, right? Obviously, we are not here to get anyone's ideas for any business purpose or anything. In that case, I would highly encourage कि अगर आप कोई अपना पेटेंट वाला करवाना चाहते हैं idea, so maybe you don't share that then. But if somebody is sending you a proposal which is worth millions of dollars, isn't there a need for a signing of an NCND with that entity at least? And since there's no guarantee that that proposal will be acceptable and they will be awarded the project, at least there should be an NCND which should exist to protect the information. Yeah, Bilal. So we expect 20, 25, 30 proposals coming in. And obviously, I don't have the resources to put in and sign different kinds of non-disclosure agreements with everyone. There's a principal condition that we have put in the request for proposals, call for proposals, with the confidentiality clause. I'm sorry, I mean, I just cannot engage multiple resources on managing these things only. No, but there could be a standard NCND valid for everyone. You know, you can draft it and you can put it up. Everybody can sign it as per the standard. Right, Bilal. So I've taken your feedback. Do you have another question? That's all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Wasif Mahmood, do you have another question? Yes, basically, my question is, we are working in Rawalpindi, and if we do an agency agreement with any outlet working all over the Pakistan, what about the means transactions generated by that agency? That means a retail outlet who has a headquarter in Rawalpindi, Islamabad, and working all over the Pakistan. And if they are using the same Raast ID, इसमें क्या मॉडल होएगा? मतलब हम इसमें वो एजेंट हमारा होएगा, अकाउंट हमारा होएगा, या जिस की जो एरिया के अंदर वो कोई लोकेट कर रहा है उसका आउटलेट, उसका सेपरेट ऑनबोर्डिंग होएगी? देखें वासिफ, आप प्रेजेंट करेंगे प्रपोजल के अंदर चीज लॉजिकली जो आप कह रहे हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, उनका हेडक्वार्टर पिंडी में है, रावलपिंडी में है, यहाँ से आप इनिशिएट करते हैं, सो वो मेन मर्चेंट फिर रावलपिंडी बेस्ड है. इट कैन हैव ब्रांचेस एनीवेयर इन पाकिस्तान, बट अगेन आप प्रपोजल में ये चीजें डाल के भेजें. ये कहीं भी कंडीशन हमारी नहीं है कि आप अपने रीजन के अलावा कोई और मर्चेंट आपका नहीं आ सकता. ऑब्वियसली अगर उसका आउटलेट है तो हेडक्वार्टर हम तो काउंट करेंगे ना. यहाँ पे हेडक्वार्टर है, हम वहीं का मर्चेंट काउंट करेंगे. आपको एडवांटेज ये है कि यू विल गेट मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन दैट मर्चेंट. जी, थैंक यू जी. Where's Heather? नहीं, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ. थैंक यू. ओके, थैंक यू. Mohammed Wajahat, can you please unmute yourself? Yes.
जी आपका कोई और सवाल है? नहीं, आई एम फाइन। पूछने anyone else has a question? अगर आपका पहले से हैंड रेज हुआ और आपका आंसर हो गया क्वेश्चन, प्लीज आप नीचे कर दें कि So उमर फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं सबकी कॉन्वर्सेशन भी सुनी है और मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बिकॉज I have a multinational experience of retailer onboarding and sale and distribution for 8 and 9 years, and we have been, guiding about the Raast payment solution to the customers, to the retailers already, especially to the Easy Pesa and Jazz Cash retailers who are receiving payments from the customers. So आप अगर इसको थोड़ा सा easy कर दें सबके लिए for understanding, मेरी जो understanding है वो यही है कि रास्ट का कोई just it's a payment solution for all the banks. कस्टमर के लिए ये आसानी होगी कि वो रिटेलर पे जाके अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है। उसके लिए सिर्फ ज़रूरी ये है कि उसका रास्त आईडी उसके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट पे क्रिएट हुआ हो। दैट्स इट। वो रास्त I आईडी think उसके that's क्रिएट जी होना आई थिंक रास्त आईडी नहीं, रास्त आईडी उसका क्रिएट होना जरूरी नहीं है ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए। इवन ट्रांजैक्शन रिसीव करने के लिए रास्त आईडी क्रिएट होना जरूरी नहीं है। रास्त आईडी इज जस्ट अ फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स टू रिसीव फंड्स। Yes. The customer just needs an IBAN based account to initiate a transaction and an IBAN based account to receive transaction. That's it. चैनल उसमें आप कोई भी कर सकते हैं, चैनल एग्नोस्टिक है। रास्ट, it could be USSD, it could be merchant ID or tel ID, whatever you call it. It could be Raast ID, it could be static QR, dynamic QR, IBAN. चैनल का कोई इशू नहीं है बिकॉज रास्ट के ऊपर ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है व्हेन द रिसीवर्स अकाउंट receives the request for the receives the fund. So yes, but you have to have a bank account for that. जी जी, तो मैंने IBAN enabled बैंक अकाउंट की बात, IBAN enabled अकाउंट की बात की है ना। That is obviously a बैंक अकाउंट और an EMI अकाउंट। सर ये वही चीज है ऑलमोस्ट के उसका जो भी बैंक अकाउंट है उसके ऊपर ही उसका रास्त आईडी क्रिएट होगा। वो कुछ भी हो सकता है। अगर उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, अगर उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है मर्चेंट का, फॉर एग्जांपल कोई भी अकाउंट, तो फिर तो उसका रास्त आईडी नहीं बन सकता। सो द आइडिया इज ही मस्ट हैव द बैंक अकाउंट। और ये मुझे ये बताइएगा, अगर उसका रिटेलर अकाउंट है, नहीं आई थिंक डोंट थिंक सो कि रिटेलर अकाउंट के ऊपर जैज कैश या इजी पैसा रिटेलर अकाउंट के ऊपर रास्त आईडी नहीं क्रिएट हो सकता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मर्चेंट सॉरी आपकी आवाज जो कट रही बैंक जी जो बैंक्स ऑन बोर्डेड हैं ऑन टू P2M यूज केस, दे वुड नो कि मर्चेंट आईडी होता है इक्विवेलेंट टू रास्त आईडी फॉर द मर्चेंट अकाउंट्स। अच्छा सर, P2M और P2P में क्या फर्क है? हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि मुझे तो ये चीजें सेम लग रही हैं। उसमें भी बैंक अकाउंट होना लाजमी है मर्चेंट का, या जो भी रिसीविंग एंटिटी है ना। बेसिकली मर्चेंट इज रिसीविंग एंटिटी जो कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट वो कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहा है। सो वो उसका पर्सनल अकाउंट ही होगा। जब वो उसका रास्त आईडी बन जाएगा तो वो उस पर पैसे रिसीव करेगा। अब आप उसको मर्चेंट अकाउंट कह लें या उसका पर्सनल अकाउंट कह लें, डिफरेंस क्या है? जी जो मर्चेंट की ट्रांजैक्शन होती है वो कॉन्टेक्सचुअल ट्रांजैक्शन है। उसमें यू गेट मोर इंफॉर्मेशन, इनवॉइस डिटेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, पहली चीज। दूसरी चीज, एक पर्सनल अकाउंट के ऊपर इफ यू इनिशिएट 10, 15, 20, 30 इनवर्ड ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस, समवन इज गोइंग टू कम एंड in fact your bank is going to come and ask you questions. तो बेसिक चीजें जो है ना वो ये होती हैं। अच्छा।
प्लस जो मर्चेंट अकाउंट है उसके ऊपर रिक्वेस्ट टू पे की ट्रांजैक्शन भी इनिशिएट हो सकती है, पर्सन टू पर्सन अकाउंट में वो इनिशिएट नहीं हो सकती। Sahi. So the idea is that anybody who is going to send the proposal, he must have the knowledge and he can differentiate between the P2P Raast ID and the P2M Raast ID. तो इसके ऊपर अगर जितनी information या knowledge मेरे पास होगी कि किस तरह से वो differentiate करता है, so then only then I can give you a better proposal. जी, वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे बेसिक चीजें तो मेंशन है और उसमें जो टीओआरस है वहां पे भी मेंशन किया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है सारी। लेकिन इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस भेज दें प्लीज, सो वी विल रिस्पोंड टू दोस क्वेश्चंस। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक Bilal Janchwa, do you have another question? Ji. I'm sorry, I'm raising a lot of questions which are a bit tough questions maybe, but I think that you must understand. You see, there is a reason the retailers don't go on the digital or the banking payment system. They want to avoid the taxation. So unless there is a clear policy by the government of Pakistan on why a retailer should come on board on the digital or the banking payment system, there must be a very clearly defined policy for the retailers and the wholesalers, which should say that, if you come on board, this is the incentive for you. We will get a tax rebate, you get all this. You see, in Pakistan, nobody wants to pay taxes. And what you're trying to do is whenever you go to a merchant and you say that you come on this system, they will tell you, why should we come? When you start recording all these transactions in the bank, there will be a tax applicable on us, and we will be on the tax net. We'll be haunted by the FBR and the income tax department, and everything will come on board, and nobody wants to show their financial summary to anyone in Pakistan. So unless there is a very aggressive incentive system in place, retailers will resist giving you coming on board. And so there has to be a very clear policy on the retailers onboarding, wholesalers onboarding so this policy has to come from SPP or the government of Pakistan. So it has to be attractive enough to onboard everyone. So this is just my comment which I wanted to make. Yes, Bilal, you are right. But unfortunately, I don't control or manage or government. I just have to play within the rules or options available to me. You are 100% right in this, and State Bank also understands it. But the thing is that this policy will not come from State Bank or cannot come from State Bank. This has to be given out by the Federal Board of Revenue. We are definitely trying to push the government, request them on having an advantage of a cashless ecosystem. Even if you have some proposals, please do share them with us, because this is what we keep on doing with them as well. But yes, you are right. Yes. So we'll have to come with disruptive and innovative models within the limitations that we have at the moment. Yeah, you see, the retailers are not bothered about the technology or disruption or whatever we are trying to do. They're not interested in this. What they want to know is, what are they going to get if they get on board on the system? What kind of number will they pocket? What is the incentive? What is the, how do they save money? What kind of incentive? So from day one, you have to take some incentive to them to get them on board. This is my point. And that clear retail policy must be there from the government of Pakistan or the Federal Board of Revenue or State Bank. In seclusion, you cannot succeed, This is the point. This is the bottom line, Right, I agree with you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much, everyone.
Avais, I think your hand is still up. Okay. So thank you very much. Even if any one of you has a question now, please send an email and we'll respond to the email. For those questions, the deadline for responding to questions will be the 7th of November. Yeah, so sorry. The questions have to be sent in to us by the 3rd of November. 7th को हम लोग उसके जो responses हैं वो publish कर देंगे on the website. And there are certain questions sent in on the question and answer tab as well. Let me see if I can answer those. So can you please give clarity on 15% cost mechanism and more clarity on cost sharing if possible? I think I did give clarity on the cost sharing stuff. For the 15% cost mechanism, that's the maximum mobilization advance that could be requested of your proposal. But that depends. We'll only support the project management, the setting up of those things over there, the PMO cost only. Next is it was presented as it's for general partners. No, it is not a for consultancy firms. I think it's very clear now. When is the presentation? Okay, so 17th is the deadline. Can banks also participate? Yes, the banks can participate, provided they come with one of the partners, which will be a lead partner. The bank cannot be a lead partner in this onboarding of the merchants, because if the banks want, they can do it themselves as well. Okay, is there a point-based system? So for Adnan, yes, there is a point-based system for technical selection, and that's mentioned in the proposal itself. What is the... Yeah, I think that's pretty much it. All the questions have been answered in the session. If there are still questions, please do send an email to us. Thank you very much.